Hi everybody, I hope that you're doing well. So as I mentioned in the previous lecture, today we are going to be focusing on the speaking and the writing part of the syllabus. अभी तक हमने AECC में जो भी पढ़ा वो काफ़ी theoretical था. We talked about the theory of communication, we read the barriers to communication, what is effective communication, what are the factors which influence communication. We studied about body language, we studied about kinesics, right? So today what we are going to do is, today we are going to focus a little bit on the speaking part and the writing part. As I mentioned in the first lecture, that communication consists of four very important things. One is reading, second is writing, third is speaking, and the fourth is listening. So today we are going to focus first on the speaking part. I hope that you can see my screen. Right, so today we are going to study a little bit about public speaking. Now, public speaking is a very important topic with regards to the examination, and also a very important topic when it comes to communication in general and in soft skills, right? Because wherever you go in life, whether you are in college or you are a working professional, or you have to host a party, you have to host a wedding, whatever it is, you need certain public speaking skills. You cannot live without these skills in this day and age. So it's very important to know how to speak well, especially in front of public. And it's challenging because we all have stage fright, right? अच्छा, आप में से मुझे बताएं चैट बॉक्स में टाइप करके कितनों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, या कितने लोगों को लगता है कि वो अच्छे पब्लिक स्पीकर्स नहीं हैं. Just type me in the chat box. Right, for a lot of people it's like a phobia, public speaking. So it is very psychological and it's very common, very natural to have stage fright because we are humans, right? We have this fear of judgment. हमें लगता है कि अगर हम फंबल कर जाएंगे या फिर अगर हम इतने सारे लोगों के सामने बोलेंगे एंड इफ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, और व्हाट इफ गॉड फॉरबिड वी फॉरगेट आवर स्पीच, or what if people don't like us, what if I ask people a question and they are not responsive, right? So this fear of judgment is ever present. This fear of crowds and this fear of embarrassing ourselves is there in everybody. Like, everybody has it. Even people who are good at public speaking, they have this fear. It's just that they have learned how to control it. They have learned how to overcome it, and they have learned how to not let it get in their way of public speaking. So we'll definitely talk about the psychological aspects of public speaking. Today we are just बहुत brief में और बहुत simply थोड़ा बहुत public speaking पढ़ेंगे. See, because yours is a theoretical exam and not a practical viva or a performative exam, तो आपके एग्जाम में पब्लिक स्पीच लिखने के लिए आएगी. यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन कि लेट्स से ये आपका टॉपिक है और इस पे आपको इतने वर्ड्स की स्पीच लिखनी है, या फिर आपको इन लोगों को एड्रेस करना है. So maybe the most common question that I've seen in the exam is that usually students are given this question that you have to write a public speech. There is some occasion and you have to address people in your school or college, and you have to write a speech on XYZ topic. So just let's look at public speaking for a bit. See, so if we talk about preparing a speech for a public performance or giving a public speech, there are two steps which are involved. The first is planning and writing, right? You have to plan your speech, you have to write it, and then comes the delivery. Both are very separate things, both need very separate skills.
because you will need to write a public speech in your exam. You will not need to focus a lot on the delivery skills, but you are going to have to speak and you're going to have to give speeches for the rest of your life. So you should know about the delivery skills also. So if we talk about the general qualities of a good speaker, कि एक अच्छा public speaker की qualities क्या होती हैं? सो सबसे पहले तो जो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होता है वो ऑडियंस का लेवल और बैकग्राउंड फाइंड आउट करता है. मतलब जैसे फॉर इंस्टेंस अगर I don't know how many of you know good public speakers, especially good motivational speakers in the country. Sandeep Maheshwari is one of them, and he's a really good speaker. So Sandeep Maheshwari usually speaks in Hindi because उनका जो audience है वो ज़्यादातर हिंदी speaking लोग हैं, right? If you look at other motivational speakers, they speak in English or other languages because उनका audience base जो है वो ज़्यादा English speaking है. सो एक अच्छा स्पीकर जो है वो अपने ऑडियंस के लेवल और बैकग्राउंड को समझता है और उसके हिसाब से अपनी स्पीच को प्रिपेयर करता है. जैसे अगर संदीप महेश्वरी किसी स्कूल में स्पीच दे रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, कोई मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, तो उनकी स्पीच के टॉपिक्स इर्द गिर्द घूमेंगे पढ़ाई के, सेल्फ कंट्रोल के, कि अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं या फिर पढ़ाई में मन कैसे लगाना है. अगर वो एक लार्जर ऑडियंस को यूट्यूब पे एड्रेस करते हैं तो his topic is going to be according to their needs. So when you are planning and writing your speech, the first thing is that you have to keep in mind the level and background of your audience. कि उनकी needs क्या हैं, वो किस बैकग्राउंड से हैं, उनका एजुकेशन का लेवल क्या है. जैसे अगर कोई भी पॉलिटिशियन फार्मर्स को एड्रेस करता है तो दे विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, दे विल टॉक अबाउट पॉलिसीज विच आर रिलेटेड टू फार्मर्स. अगर कोई भी पॉलिटिशियन लेट्स से किसी इंटरनेशनल ऑडियंस को इंडिया से बाहर जाके संबोधित करता है तो फिर दे विल टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसीज, दे विल टॉक अबाउट यू नो इंडियाज रिलेशनशिप with that country. So the speech is going to be according to the level and background of the audience. If you talk about the delivery part, then of course you have to be clear, you have to be confident, you have to be audible enough so that your audience can understand you. And you know, like हमने पैरा लैंग्वेज में बात की थी कि आप किसी चीज़ को कैसे बोलते हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. हमने पैरा लैंग्वेज में पिच पढ़ा था, टोन पढ़ा था, इंटोनेशन पढ़ा था. सो पिच, टोन, इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, हैंड जेस्चर, स्पेस जेस्चर्स, बॉडी मूवमेंट्स, ये सारे परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज के और कम्युनिकेशन के. तो जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, जैसे स्पीच भी एक परफॉर्मेंस है, राइट? अगर आप बड़े बड़े स्पीकर्स को देखें जो टेड टॉक्स देते हैं, जो यूट्यूब चैनल पे बड़ी बड़ी टॉक्स देते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे स्पीचेस देते हैं, इट्स बेसिकली अ परफॉर्मेंस. इफ़ यू go into the science of public speaking, a lot of it is just performance. So you know, these things are related to paralanguage, or your audibility, your tone, your pitch, your intonation, that becomes very important. Of course, your pronunciation is very important because when you are delivering a speech, you are speaking. So your pronunciation is very important so that your audience can understand you. Using natural gestures and body movements is very important because अगर आप एक स्टैचू की तरह बन के खड़े हो जाएंगे तो your speech and your performance is not going to be engaging enough. जैसे अगर आपने सेलिब्रिटीज़ को देखा हो तो सेलिब्रिटीज़ बहुत मूव करते हैं पूरे स्टेज पे. उनके पास स्टेज होता है जब वो ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं. जैसे अगर कोई सिंगर गाना गाता है तो वो माइक ऐसे रखता है एंड देन वो ऑडियंस की तरफ कर देता है सो दैट दी ऑडियंस कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट. अगर सेलिब्रिटीज़ डांस कर रहे होते हैं या फिर लेट्स से वो बात कर रहे होते हैं तो वो अचानक से ऑडियंस के की तरफ नीचे उतर के आते हैं सो दैट दे कैन शेक हैंड्स विद द ऑडियंस. सो all of that, you know, all of that is a part of public speaking only. Whatever you are speaking in public is public speaking, you know, it doesn't have to be a formal speech.
Eye contact is very important. I think eye contact is the scariest part when it comes to public speaking, because you are already so scared and so nervous that you forget to make eye contact with all the people in the audience. बहुत सारे लोग के साथ होता है, जैसे मेरे साथ भी ये होता है दैट अगर बहुत सारे लोग हैं और स्पेशली एक स्टेज है, तो बिकॉज आई एम ऑलरेडी नर्वस एंड आई हैव दिस फियर कि इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जल्दी से स्पीच दें और स्टेज से निकले. सो यू नो लाइक ऑफन द मिस्टेक दैट पीपल मेक इज वो सिर्फ एक इंसान की तरफ देखते हैं, which is problematic, because when you are addressing an audience, you have to make eye contact with everybody, or make just sweeping general eye contact idhar se udhar se idhar, so that people know that they are being engaged. If we talk about the methods of delivery, there are different ways to deliver a speech, right? अगर आप अच्छा, give me a name of one public speaker that you really admire, या जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे public speaker हैं. Just give me names of people who you think are really good public speakers. Sandeep Maheshwari is one, yes. Yeah, Mr. Modi is also a very good orator. He is also a very good speaker. What else? So people have different methods of delivery. जैसे अगर आप ने कभी बहुत सारे politicians हैं, for instance, I remember Rahul Gandhi. There are so many other politicians also. Pratibha Patil was one who used to read out from the manuscript. मतलब उनके पास एक कागज होता था और read out करते हैं. So a lot of times when you don't have the time to memorize, or you feel like there is no need to memorize the speech, you read from a script. You have this paper. जैसे जो जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं, तो उनके अगर आपने कभी देखा हो कि वो कभी भी कोई चीज़ भूलते नहीं है, उनका बहुत सीधा आई कांटेक्ट होता है कैमरे के साथ. लाइक दे डोंट वेवर इन देयर आई कांटेक्ट. दैट इज बिकॉज जहाँ पे कैमरा लगा होता है, कैमरे के पास ही एक टेली प्रॉम्प्टर होता है जिसमें उनको लाइन्स दिखती हैं जो उनको रीड करनी होती हैं. सो बेसिकली दे आर रीडिंग आउट वट एवर दे हैव टू से, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट इन अ लाइव in live news reading. They cannot forget things. So they read out from the manuscript. Some people memorize. Say Mr. Modi usually memorizes his speeches. He does not look at a paper and then read it out loud. Sandeep memorizes his speeches. There's this thing called extempore. यहाँ पे इतना clearly नहीं दिख रहा है. It's EXTEMPORE. It's extempore. Extempore is the most effective method of public speaking. इसमें क्या होता है कि आप, if you are familiar with the concept of cue cards, एक छोटा सा कार्ड होता है जिस पे स्पीकर ने कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, और या फिर उनके पास बहुत सारे कार्ड्स होते हैं जिसपे उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, एंड वो उन कार्ड को देखते हैं और फिर ऑडियंस को एक एक पॉइंट इलेबोरेट करके बताते हैं, राइट. सो उसमें क्या होता है कि बीच में कोई कागज़ भी नहीं आता. उसमें ये भी होता है कि भूलने का डर नहीं होता, बिकॉज इफ़ यू आर फॉरगेटिंग यू कैन जस्ट गो बैक टू योर कार्ड एंड देन यू कैन गो बैक टू योर ऑडियंस, राइट. तो जितने भी आप टेडएक्स के टेड टॉक्स के स्पीकर्स देखेंगे, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वो कार्ड्स होते हैं. दे कीप कार्ड्स विद देम. Usually when people teach, they keep notes with them, they keep cards with them. So that's called extempore, where you have a small aid to remember your points in the form of card, but you also are not big
sheet, or you don't have the fear of forgetting things. There's one called the PowerPoint method. PowerPoint method is the most common in meetings. TED Talks में भी ये बहुत कॉमन है, वेयर आपके पास कुछ रिमोट होता है जिससे आप स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं, एंड देन यू मेक प्रेजेंटेशन, राइट? तो किसी डायग्राम के थ्रू या किसी किसी डायग्राम, किसी पीपीटी के थ्रू आप अपने पॉइंट को समझाते हैं. सो यू कैन लाइक द ऑडियंस हैज यू, but the audience has, you're teaching somebody something very theoretical, or you need visual. A PowerPoint presentation is a very very good method to create a visual. Just for instance, if I ask you, what kind of life do you imagine when you think about money, and if I make a PPT and if I show you a lot of money, that will emphasize the points that I'm talking about. So the PPT method is one. And then impromptu means spontaneously, like without preparation. जैसे फॉर इंस्टेंस किसी का बर्थडे होता है, या फिर ये फेयरवेल्स में बहुत होता है कि किसी का फेयरवेल होता है तो उसको बोलते हैं कि अरे 4 शब्द बोलिए. तो वो जो 4 शब्द जो लोग बोलते हैं विदाउट एनी प्रेपरेशन, विदाउट preparing your speech पहले से, so that those 4 शब्द are impromptu when it comes to public speaking. So basically there are different methods of public speaking. आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि क्या ओकेजन है. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको किसी चीफ गेस्ट को वेलकम करना है, तो योर स्पीच इज नॉट गोइंग टू बी इम्प्रॉम्प्टू, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. बट ऑन द कॉन्ट्री, अगर आपको किसी को एक थैंक यू स्पीच देनी है या कोई ग्रैटिट्यूड स्पीच देनी है, इट कैन बी वेरी वेल इम्प्रॉम्प्टू. See, if you talk about an effective delivery and effective writing of public speech, the first point is important, that you have to have a catchy beginning. तो catchy beginning कैसे होती है? Catchy beginning, अगर आप speech लिख रहे हैं तो आपका जो title है वो अगर catchy हो तो अच्छा रहता है. Also हमें जैसे स्कूल में अक्सर सिखाया जाता था और पढ़ाया जाता था कि अगर आप कोई भी स्पीच लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो उसको एक कोट से स्टार्ट करें. इफ़ यू स्टार्ट एनीथिंग विद अ कोट, दैट रियली इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्पीच. जैसे अगर आपने स्पीकर्स को देखा हो, अगर कोई आपको हेल्थ पे लेक्चर दे रहा है या हेल्थ पे कोई स्पीच दे रहा है, आपको क्या लगता है कि यूजुअली वो कैसे स्टार्ट करेगा अपनी स्पीच? वो आपको कोई ना कोई स्टैटिस्टिक बताएगा. वो आपको बताएगा कि आज इंडिया में 50% लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं, या वो आपको कोई स्टैटिस्टिक बताएगा कि 10 million people suffer from chronic diseases and are overweight all around the country right now. So what is that supposed to do? Why are you starting your speech with a statistic, with a shocking statistic? Or if someone is giving you a speech on non-violence, maybe someone would quote Mahatma Gandhi, that eye for an eye and the whole world will go on. So why are they doing it? They're doing it to catch your attention, so that you are invested in the speech from the very beginning. If someone tells you that today I'm going to talk about health, and if someone tells you that, do you know 70% of the people in the country suffer from at least one disease, so you will be shocked. You'll be like, oh my god, am I in that category? Am I is a loved one in that category? You will be shocked and you will be forced to listen. That is the importance of a catchy beginning, that if you start with a catchy beginning, you start with a note, sorry, if you start with a quote, if you start with a few lines, good lines, if you start with a shocking statistic, if you start with numbers, you get a catchy beginning. In terms of delivery, as we discussed, pronunciation, voice modulation, body language is very important.
use of illustrations and examples is also very important, right? जैसे लाइक फॉर इंस्टेंस मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कोई आपको हेल्थ के बारे में स्पीच देगा तो वो ये बताएगा कि अगर 70% लोग बीमार हैं तो आप उसकी बात सुनेंगे, राइट? दैट्स एन इलस्ट्रेशन, दैट्स एन एग्जांपल. सो एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सेइंग समथिंग बिकॉज समझाना आसान हो जाता है लोगों को. यूज ऑफ ह्यूमर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज उससे इंटरेस्ट बना रहता है. यू हैव टू क्रैक अ फ्यू जोक्स और यू हैव टू मेक श्योर दैट योर ऑडियंस इज लाफिंग अ बिट in between. And like an ending should be either very conclusive or empathetic, like it should be encouraging कि there is a problem but we can do something about it, या फिर maybe expressing gratitude. So ending is important as well because ending sums up whatever you're trying to say. Now this part is important. Types of speeches. So there are different types of speech, right? And you can get any kind of speech in your exam to write. So it's always better to know कि कौन से type की speech के क्या characteristics होते हैं, कौन से type की speech कैसे लिखी जाती है, so that you can write it better. As I said कि आप का speech किस type का होगा वो depend करता है आपके occasion पे, right? तो जैसे फॉर इंस्टेंस आपको किसी चीफ गेस्ट को वेलकम करना है तो आप एक वेलकम स्पीच देंगे. यूजुअली जब कॉलेज में फेस्ट होते हैं या इवेंट्स होते हैं तब वेलकम स्पीच दी जाती है किसी भी इवेंट के बिगनिंग में, राइट? तो वेलकम स्पीच में क्या होता है? वेलकम स्पीच ऑफ कोर्स इज फॉर्मल. वेलकम स्पीच में आप पहले तो सबको ग्रीट करते हैं, जितनी भी ऑडियंस होती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू दिस इवेंट टुडे, आई वेलकम यू ऑल. उसके बाद फिर आप जो भी जिसको भी वेलकम कर रहे हैं, वेलकम मतलब किसी का स्वागत करना, राइट? आप जिसको भी वेलकम कर रहे हैं आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये हमारे गेस्ट स्पीकर हैं या ये हमारे चीफ गेस्ट हैं. उनके बारे में बताते हैं कि उनके टाइटल्स क्या हैं, उनके वो इतने वो वेलकम के लायक क्यों हैं, उनके अचीवमेंट्स या उनके डिस्टिंक्शंस क्या हैं. So the first part is where you greet. The first paragraph goes in greeting. Okay. The second paragraph is introducing somebody. The second paragraph goes in introducing. The third is like second, third paragraphs can go in introducing. The third paragraph will go in something like कि आप करते हैं इवेंट की शुरुआत या फिर now that you know about our chief guest, let us invite the chief guest to say a few words, something like that. So it's basic, it's very simple. इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत सिंपल है. आप ग्रीट करेंगे, उसके बाद फिर आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद फिर आप बहुत ब्रीफ में वेलकम करेंगे अपनी वेलकम स्पीच, राइट? सो दैट्स द फॉर्मेट ऑफ अ वेलकम स्पीच. The second type of speech is a valedictory address. अगर आप YouTube पे जाएं और आप टाइप करें valedictory address, so हमारे यहाँ तो इतना कल्चर नहीं है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इंडिया के बाहर, वहाँ पे लोग ग्रेजुएट करते हैं कॉलेज से, राइट? लोग ग्रेजुएट करते हैं और क्लास में से कोई एक इंसान चुना जाता है जो वैलिडिक्टरी एड्रेस देता है. It's basically when someone is graduating and they are saying farewell to the entire class, but they are also giving like a sort of motivational speech to motivate everybody for the future ahead. So that is a valedictory address. वैलिडिटरी एड्रेस यूजुअली एंड में होता है. जैसे जो वेलकम स्पीच है वो शुरुआत में होती है किसी भी इवेंट के, वैलिडिटरी एड्रेस एंड में होता है. वैलिडिटरी एड्रेस में बेसिकली ऑफ कोर्स अगेन फर्स्ट यू ग्रीट पीपल, उसके बाद फिर आप बताते हैं कि कैसे जो भी इवेंट था उसका एंड हो गया है,
वो इवेंट कैसा था आपके लिए और बाकी लोगों के लिए, उस इवेंट में क्या क्या हुआ, और फिर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं दैट आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस थिंग. तो from the point of view of the exam, validatory address is not very important because you're not very familiar with it, but you should still know how to give a validatory address, right? फिर आता है farewell speech. So by the by, तो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली नहीं बताएंगे कि आपको फेयरवेल स्पीच लिखनी है या आपको वेलकम स्पीच लिखनी है. आपको टॉपिक दे देंगे, आपको क्वेश्चन दे देंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट काइंड ऑफ स्पीच विल दैट बी. इट्स फेयरली इजी. अगर आपको कोई क्वेश्चन में बोले कि चीफ गेस्ट है उसको आपको वेलकम करना है, इट्स फेयरली ऑब्वियस दैट इट्स गोइंग टू बी अ वेलकम स्पीच, राइट? फेयरवेल स्पीच, आप सबका स्कूल में फेयरवेल हुआ होगा. स्कूल में जब फेयरवेल होता है तो फिर लोग फेयरवेल स्पीच देते हैं. वो इट्स सॉर्ट ऑफ इमोशनल इन नेचर. A farewell speech is mostly emotional in nature. It's a little informal in nature because a farewell is not a very formal event. The crux of a farewell speech or the foundation of a farewell speech is that people express gratitude and sadness at leaving an organization. कोई कंपनी छोड़ता है या कोई कॉलेज छोड़ता है तो आप बोलते हैं कि जो ये साल थे जो आपने स्पेंड किए वो आपके लिए कितने यादगार थे, आपके जो टीचर्स थे, आपका जो मैनेजमेंट था, आप कितने शुक्रगुजार हैं उनको. आप कुछ मेमोरीज शेयर करते हैं, कुछ ह्यूमरस एनेक्डोट्स शेयर करते हैं. You ask for forgiveness if you may have made some mistakes, and then you share how great an experience it was for you. So it's emotional. You express gratitude, you express thankfulness, and you share memories and some emotional stuff, right, in a farewell speech. Now comes the motivational speech. So motivational speech के बहुत सारे examples हैं because nowadays this trend of motivational speaking is on the rise. So बहुत सारे motivational speakers हैं, from Sandeep Maheshwari to Les Brown to just all celebrities, right? So a motivational speech is supposed to be energetic in nature. ये किसी भी ओकेजन पे डिलीवर की जा सकती है. मोटिवेशनल स्पीच is like just supposed to motivate people and just bring some energy so that you can move them towards taking action. So it's going to use a lot of energetic motivational phrases. You can start it with a quote. You can have a very optimistic beginning and a very optimistic ending. You can have a very optimistic positive note running through your speech if you have to write a motivational speech. An informational speech is the most common. ये वो यूजुअली स्पीचेस होती हैं जिसमें एक टॉपिक दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इस टॉपिक पे आप कोई स्पीच लिखें. So informational speech is the most important from the point of view of exam. So informational speech का फॉर्मेट या उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस यही जो एग्जाम्पल दिया है इसको थोड़ा देखते हैं. अगर आपको इस टॉपिक पे स्पीच लिखनी है कि मीडिया पब्लिक ओपिनियन को कैसे शेप करती है, तो आप सबको ग्रीट करेंगे. हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज दिस, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट बिफोर यू माय व्यूज, या आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक XYZ, राइट. उसके बाद फिर आप तो स्पीच का पहला पार्ट इज वेयर यू ग्रीट पीपल. उसके बाद फिर देयर इज एन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. तो यू इंट्रोड्यूस द टॉपिक और यू इंट्रोड्यूस जो उस टॉपिक का जो कीवर्ड है आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे इसमें मीडिया कीवर्ड है, तो मीडिया क्या होता है, मीडिया क्यों इम्पोर्टेंट है, मीडिया
लाइफ है, वो सब आप फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। उसके बाद फिर आपके जो फर्दर पॉइंट्स होते हैं कि उसका क्या रेलेवेंस है आज की डेट में, वो कितना इम्पोर्टेंट है, आजकल क्या हालत है, जो प्रेजेंट सर्कमस्टेंस है वो क्या है आजकल का, राइट। मे बी यू कैन कंपेयर इट टू द पास्ट, यू कैन लिस्ट आउट द प्रॉब्लम्स कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद फिर यू कैन लिस्ट आउट द सोल्यूशंस कि क्या क्या सोल्यूशंस हैं, एंड देन यू कैन have a concluding paragraph in the end. So, if you talk about the length, an informational speech, of course, depending on the topic and depending how much time you have, can be of maybe 1 page, 1.5 pages roughly, like 1 to 2 pages, not more than that, and definitely not less than 1 page. It should be 1 page, 1.5, 2 pages, right? Because 4-5 पैराग्राफ्स, 5-6 पैराग्राफ्स आराम से बन जाते हैं अगर आप ठीक से उसको डिवाइड करें तो। आई सेंड यू दिस नोट्स, इसमें कुछ सैम्पल टॉपिक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। If you have to understand how to write a good public speech, right? Right. So far we have talked about if पब्लिक स्पीकिंग के पब्लिक स्पीकिंग परफॉर्मेटिव होता है नेचर में, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो आपका होता है प्लानिंग एंड राइटिंग, वेर यू प्लान एंड राइट अ स्पीच, एंड एक होता है आपका डिलीवरी। दोनों के लिए अलग अलग स्किल्स चाहिए। प्लानिंग एंड राइटिंग के लिए राइटिंग स्किल्स चाहिए विच आर हार्ड स्किल्स। स्पीच डिलीवरी के लिए सॉफ्ट स्किल्स चाहिए related to para-language, related to performance, related to your confidence, related to your personality. You've talked about the types of speeches कि किस किस ओकेजन में किस किस टाइप की स्पीच होती है और डिफरेंट स्पीचेस के क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, राइट। एनीबडी हैज़ एनी डाउट सो फार? अगर कोई डाउट्स है तो पूछिए, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट डन विद पब्लिक स्पीकिंग। इस टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो पूछिए। When it comes to how to effectively write a speech, see, the writing is going to be very impromptu, right? It's not like you can mug things up and you can prepare for it. So if we talk about, especially from the point of view of an exam, and if we talk about your writing skills of how to write an effective public speech in general, तो सी ये ध्यान रखें हमेशा, जैसे आप लेटर लिखते हैं उसका राइटिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, आप पब्लिक स्पीच लिखते हैं उसका राइटिंग डिफरेंट होता है। कैसे और क्यों? जब आप लेटर लिखते हैं तो लेटर यूजुअली फॉर्मल होता है। अगर आप अपने दोस्त को इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो भी वो जो लेटर है वो पढ़ने के लिए है, वो स्पीच के लिए नहीं है, राइट? मतलब वो बोलने के लिए नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है कि टोन काफ़ी कॉन्वर्सेशनल हो जाती है। You have to remember, whenever you write a speech, always remember that you have to write it in a way where it sounds like you are talking to the audience, you're talking to somebody. So the tone in the public speech is conversational. It can be engaging. You have to greet people, don't forget that. The greeting part is very important. Speeches are longer. Letters are not that long. Letters are a little short because reading में time लगता है. But speaking, when you speak fast, right? So speaking में इतना time नहीं लगता. So speeches are usually longer. Also remember that a letter can be reread, but a public speech is only spoken once. So it's always better to divide your content into paragraphs. Why? Because and in what way? Like
एक पैराग्राफ एक टॉपिक को एड्रेस करता हो। जैसे एक पैराग्राफ हो गया आपका प्रॉब्लम्स के लिए, एक पैराग्राफ हो गया सॉल्यूशंस के लिए, एक पैराग्राफ हो गया अपने व्यूज़ के लिए, एक पैराग्राफ हो गया जनरल व्यूज़ के लिए, एक पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन के लिए, एक पैराग्राफ हो गया कंक्लूजन के लिए, राइट? सो इट्स ऑलवेज बेटर टू divide your speech into paragraphs and about speech. See, it's not compulsory. It's not compulsory that you start a speech with quotes. It's always good. Nothing is compulsory. अगर आपको कोट नहीं याद आ रहा है तो ना लिखें, या अब मन से कुछ अच्छा सा बना के लिखें. About writing a speech, the topic is going to be very general. हो सकता है स्मार्टफोन्स के बारे में पूछें, हो सकता है लॉकडाउन के बारे में पूछें, कोई पॉलिटिकल टॉपिक के बारे में पूछें. तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सम जनरल नॉलेज. सम climate is a very very hot topic. Climate change is a very important topic. If we go into the list, topic can be asked, but you know, like जो अभी current hot topics हैं, उन पर ज़्यादा आ सकता है. Environment is one, climate change is one, pollution is one, then smartphones is one, technology is one, health is one, because COVID has made us realize that health is very very important, right? So these can be very important topics for a public speech. Someone is asking how does speech differ from writing? Speech में भी writing वाला part होता है, because ultimately आप speech को लिखते ही हैं. Delivery में फ़र्क आता है, आप उसको कैसे बोलते हैं उसमें फ़र्क आता है. Alright, so we are done with the topic of public speaking. Remember, public speaking पे जो question आता है, that is usually of 10 marks. The usual question is कि आपको कोई topic दे देंगे और उस पर बोलेंगे speech लिखने के लिए. It's very scoring. So remember to practice and you know just remember to pay attention to this topic, because there is a direct question of 10 marks always. Now let us move on to the next topic, which is related to writing. As I said in the beginning of the lecture that today we are going to study parts of the syllabus related to speaking and writing. So ये वाला जो topic है summarizing and paraphrasing, ये writing में आता है, right? This is a very important topic from the point of view of exam. Summarizing and paraphrasing पे दो अलग अलग questions आ सकते हैं, either 5 marks के और 10 marks के, right? Usually 10 marks के questions आते हैं, and it's like it's very easy and it's very scoring. So basically, what is summarizing? I'm pretty sure you are a little familiar with writing summaries or reading summaries. Basically, जब किसी लंबे से टेक्स्ट को किसी लंबी सी चीज़ को कोई लंबी चीज़ लिखी होती है, उसको हम छोटा बना देते हैं. उसमें से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटेल्स नहीं है उनको निकाल के ईजी टू रीड बना देते हैं, तो उसको समरी बोलते हैं.
I'll be back in a minute. A few students are asking that ये जो टॉपिक्स हैं ये बुक में नहीं है या ये सिलेबस में नहीं है. ये हो सकता है कि SOL के स्टडी मटेरियल में इतना डिटेल में ना हो. आई एम नॉट श्योर कि ये स्टडी मटेरियल में है या नहीं. But these are very important topics. Please do not think कि पब्लिक स्पीकिंग, समरी एंड पैराफ्रेजिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बिकॉज ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हैं, आपके सिलेबस में है, आपके कोर्स में है, और ये एग्जाम में आएंगे. थियोरेटिकल क्वेश्चंस आए या नहीं आए, या हमने जो थियोरी पढ़ी है इससे पहले शुरू के 3 लेक्चर्स में, वो आए नहीं आए, बट ये राइटिंग बेस्ड क्वेश्चंस और स्पीकिंग बेस्ड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं और बहुत फोरन होते हैं. So do not take them lightly. Yeah, so we were talking about summary. कि summary क्या होती है, right? So as I said कि I'm pretty sure as students of English literature you are very familiar with summaries because बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं और बहुत बार वो बड़े बड़े टेक्स्ट पढ़ने का टाइम नहीं होता है. You just need to understand quickly the story of the text, the story of whatever novel or poem you're reading. So that is where summary is very effective, summary is very efficient. Summary is not only a literary device. जैसे जब भी कोई प्रोफेशनल कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती हैं तो हर मीटिंग्स 3-3, 4-4 घंटे चलती हैं, राइट? कभी कभी दिनों तक चलती हैं, पूरे पूरे दिन चलती हैं. तो मीटिंग के एंड में भी एक मीटिंग मिनट्स करके होता है जिसमें मीटिंग की समरी होती है कि मीटिंग किस बारे में थी, कौन कौन था, क्या क्या डिस्कस हुआ. तो समरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस in order to simplify things and in order to save time, right? Now what are the features of summary? मतलब एक summary में क्या क्या होता है या summary का nature कैसा होता है. So summary अपने आप में बेसिकली कोई भी लंबा टेक्स्ट है, कोई भी बड़ा टेक्स्ट है, उसका एक छोटा वर्जन जो होता है उसको समरी बोलते हैं. ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है. मतलब समरी इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए और समरी इतना सेल्फ कंटेन होना चाहिए कि आपको समरी पढ़ के पूरी कहानी समझ आ जाए, आपको किताब पूरी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, राइट? ऐसा ना हो कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स छूट जाए. तो समरी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट वर्जन ऑफ अ लॉन्गर पीस. इसमें सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं और जो ओरिजिनल टेक्स्ट का आइडिया होता है ये उसी को कन्वे करता है, राइट? जैसे अगर जो कछुए और खरगोश कहानी है, अगर मुझे उसकी 2 मिनट की समरी आपको बतानी हो तो मैं बोलूँगी कि एक बार एक कछुआ था, एक खरगोश था. उन दोनों ने सोचा कि चलो हम रेस लगाते हैं. खरगोश को लगा कि वो जीत जाएगा, तो उन्होंने रेस लगानी स्टार्ट की. कछुआ पीछे पीछे आ रहा था धीरे धीरे, और खरगोश बहुत तेज़ भागकर उसने बहुत सारा डिस्टेंस कवर कर लिया. उसको लगा कि वहाँ कछुआ तो धीरे धीरे आएगा, तो मैं नैप ले लेता हूँ. तो वो नैप लेने लेट गया. उसकी जब आँख खुली तो उसने देखा कि कछुआ बीच में रुका नहीं. ही वॉज स्लो बट ही वॉज स्टेडी एंड ही वन द रेस. तो हमने बचपन में ये 2 पेज की कहानी पढ़ी है, मैंने आपको उसको 2 मिनट में बताया. तो मैंने क्या किया, मैंने इफेक्टिवली अभी समराइज किया. तो क्या आपको वो ज़रूरत ऐसी महसूस हुई कि आपको उस कहानी को पढ़ने की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड मोर ऑफ इट? नो, लाइक यू गॉट अ जिस्ट ऑफ व्हाट द स्टोरी इज, राइट? So that is how a summary should be. Now how to write a summary? Let's go over the basics of writing a summary briefly. सबसे पहले तो पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ें. See, it might sound very easy to write a summary. आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये तो हमें आता है, हम तो रोज़ इंटरनेट पे प्राइड एंड प्रेजुडिस की और इन सब की समरी पढ़ते हैं, तो हमें तो समरी लिखना आता है. बट
you know, like students make a lot of mistakes. स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसा करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डिटेल होती है उसको समरी में इंक्लूड नहीं करते, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट डिटेल नहीं होती उसको समरी में इंक्लूड कर देते हैं। बहुत बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो पूरा का पूरा पैसेज ऐसे के ऐसा ही चेप देते हैं, उसको समराइज नहीं करते और उनको लगता है कि उन्होंने समरी लिख दी। बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि एक दो लाइन छोड़ देते हैं, बाकी पूरा का पूरा पैसेज ऐसे का ऐसा उठा देते हैं। दैट इज़ नॉट समराइजिंग, दैट इज़ कॉपी, दैट इज़ सिलेक्टिव ओमिशन, दैट इज़ नॉट समराइजिंग। समराइजिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, राइट? दैट ऑल्सो नीड्स a certain level of writing skill. So how to go about it is you read the passage, you try to understand what the author is trying to say, because if you don't understand what the author is trying to say, you will not be able to summarize it, right? आपको खुद तो पहले समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है author, उसका general argument क्या है, right? फिर उसमें से जो सेंट्रल आइडिया है और उसके जो सब आइडियाज़ हैं उनको एक बार जॉट डाउन करें, या फिर उनको एक बार उनका एक मेंटल नोट बना लें कि ये सेंट्रल आइडिया है, ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो इस आइडिया को नेगेट करते हैं, ये एग्जाम्पल दिया है उसने इस आइडिया को समझाने के लिए, एंड में वो ऑथर ये बोलता है, बिगनिंग वो ऐसे करता है, ठीक है? या फिर ये ऑथर का स्टैंड है इस टॉपिक को लेके। देन उसको फिर अपनी once you know what the author is trying to say, once you know what the major important points are, you draft it in your own language and you write it, right? A very important, like a very common and a very funny mistake that a lot of students make is that they don't change the person in the summary. जैसे we have three persons, right? I is first person, you is second person, they or he, she is third person. There are three persons in English grammar, right? So बहुत बार ऐसा हुआ है एग्जाम में कि पैसेज में फर्स्ट पर्सन में पैसेज है, जैसे ऑथर बोलता है that I grew up in this town and I got very attached to it. So students have often forgotten to change the person in the passage while summarizing it. Students लिख देते हैं the author says I grew up in a town. No, the author says that he grew up in a small town and he got very attached to it, right? So I से he करना है, या I mean first person से you can change it to third person, right? So that is something that you have to remember. कुछ grammatical rules भी हैं that you have to remember, that जब भी कोई डायरेक्ट स्पीच होती है और आप उसको समरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है दैट लग के। देन जब भी आप कोई कोट होता है तो उसको पूरा पूरा नहीं लिखते हैं, उसको आप अगेन इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके शॉर्ट में समराइज करके लिखते हैं। Two more important points that you have to remember while writing a summary is that, see, in literature, when you are analyzing a text, you are supposed to give your own opinions. But when you are writing a summary, you are not supposed to give your own opinions or comments. You are not supposed to add anything that's not originally in the passage. जैसे आप ये नहीं लिख सकते कि ऑथर ने ऐसा बोला है और आपको ऐसा लगता है कि ऑथर को ऐसा बोलना चाहिए, या फिर आई अग्री विद द ऑथर. यू कैन नॉट अग्री और डिसएग्री विद द ऑथर इफ यू आर समराइजिंग, राइट? उसमें आपका पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं आता है. देन बहुत बार ऐसा होता है कि जो ओरिजिनल पैसेज होता है उसमें मुहावरे होते हैं, कोटेशंस होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप उसको समरी में डालें. इनफैक्ट यू शुड अवॉइड इट, बिकॉज वो समरी की लेंथ अननेसेसरीली ज़्यादा बड़ी कर देगा. अगर आपको लगता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है पैसेज के लिए, उसके बिना पैसेज का कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल हो जाएगा,
तो उसको शॉर्ट में समझा दें, राइट? जैसे द poet explains this with the help of an example, right? Another important thing, जब पैसेज में किसी का नाम और डेजिग्नेशन होता है ओरिजिनल पैसेज में, तो इट्स बेटर कि आप समरी लिख रहे हैं तो फिर नाम ना लिखें, फिर डेजिग्नेशन लिखें। जैसे अगर ओरिजिनल पैसेज में लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसी इन 2010 to help the poor people of the country. So, what you can write in the summary is the Prime Minister of India introduced this policy. So you don't have to include the name, right? These are some points that you have to remember while writing a summary. If you talk about the length, there is no hard and fast rule, but try that your summary does not exceed 1 page, right? Or half a page. एक समरी के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं. लेट्स लुक एट देम वेरी वेरी क्विकली. वन इज कंसाइजनेस, इट शुड बी ब्रीफ. अच्छा, एक और चीज़ है जो याद रखनी है समरी लिखते टाइम, वो ये कि उसको बहुत फ्लारी नहीं बनाना है. मतलब जैसे जो लोगों को लिखने का शौक होता है उनकी आदत होती है कि वो थोड़ा लैंग्वेज को ना फ्लारी बना देते हैं या थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं. जैसे मैंने स्पीच का एग्जांपल दिया है ना, तो स्पीच में आपने कोटेशन लिखा, स्पीच में आपने स्टेटिस्टिक लिखा, स्पीच में आपने लोगों को ग्रीट किया, स्पीच में आपने एक 5-6 पैराग्राफ में इलेबोरेट किया एक टॉपिक पे. ये जो चीज़ें हैं ये समरी में नहीं करनी है. लेकिन समरी इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, राइट? उसको पढ़ के समझ आना चाहिए कि ओरिजिनल पैसेज का आइडिया क्या है. One more thing, you don't need to divide your summary into a lot of paragraphs. आप उसको थोड़े बहुत पैराग्राफ्स में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समरी को बहुत सारे पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, राइट? अगेन योर लैंग्वेज शुड बी सिंपल. जैसे अगर ओरिजिनल पैसेज में कोई बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड है तो वो डिफ़िकल्ट वर्ड या वो टेक्निकल वर्ड समरी में ना चेपें, उसको सिंप्लीफाई करके उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन समरी में लिखें, राइट? सो these were some points that you have to remember while writing a summary. Now what we are going to do is we are going to take a small break of maybe 10 minutes. Right now it's 4:06. So let's meet at 4:16. You can go drink your water, take whatever break you need, and ask your doubts in the meantime. And we'll come back and I'll try to answer as many doubts as I can. And उसके बाद फिर हम paraphrasing करेंगे, right? Alright, let's take a break. Alright everybody, we are back from our break. So I could see no substantial doubts in the chat section. So let us move on to paraphrasing. Now, see, paraphrasing and summary are a little similar, yet a little different. समरी तो ऐसा होता है कि अगर कोई टेक्स्ट है, आप उसके जो अनइम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो उसकी काट छाट करके एक कंसाइज मैनर में उसका जो आइडिया है वो प्रेजेंट कर दें, राइट? ना पैराफ्रेजिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग बेसिकली इज डन व्हेन किसी और का आइडिया आप अपने शब्दों में लिखते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस, लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. शेक्सपियर ने कहा है टू err is human, to forget divine. ठीक? इसका मतलब है इंसान गलतियाँ करता है, वो बहुत ह्यूमन है गलतियाँ करना, लेकिन किसी को माफ़ कर देना वो दैव्य है. मतलब लाइक इट हैज़ दैट्स अ गॉड लाइक क्वालिटी.
So basically what I did here, to explain you, I paraphrased Shakespeare's words in Shakespeare's sentence in my own words. So I paraphrased. दिस इज़ बेसिकली पैराफ्रेजिंग कि जब आप किसी और के मैसेज को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हैं, अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ पैराफ्रेजिंग. अच्छा, समरी और पैराफ्रेजिंग में क्या फ़र्क है? पैराफ्रेजिंग करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि आप किसी और के आइडियाज़ को अपने शब्दों में बोल रहे हैं, तो सारे आइडियाज़ इम्पॉर्टेंट हैं. मतलब समरी में आप जितनी डिटेल बाहर छोड़ेंगे, उतनी डिटेल्स पैराफ्रेजिंग में बाहर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. समरी में एज आई सेड कि आप टेक्स्ट को शॉर्ट करें, पैराफ्रेज में आप लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, मतलब उसको दूसरी तरीके से बोल रहे हैं. सो इट्स लाइक रीस्टेटिंग समथिंग, राइट? सो लेंथ में थोड़ा फ़र्क होता है. समरी इज सपोज टू बी शॉर्टर. पैराफ्रेजिंग ज़रूरी नहीं है कि वो पैसेज से छोटी हो, राइट? Yeah, this is pretty much it. So let us revise the difference between paraphrasing and summary, because दोनों पे क्वेश्चन आते हैं. आप हो सकता है कि paraphrasing पे भी एक क्वेश्चन आ जाए और summary पे भी एक क्वेश्चन आ जाए. So the key difference is that you have to remember, summary जो है वो short होती है. summary में आप अपने शब्दों में चीज़ों को नहीं लिखते हैं, बट आप शॉर्टन करते हैं, मतलब जो भी आइडिया है उसको शॉर्टन करते हैं, राइट? So summary is supposed to be more concise, more brief, more crisp, more short. Paraphrasing में जो भी कहा गया है आप उसको अपने शब्दों में रिवर्क करते हैं. आप चाहें तो उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि पैराफ्रेजिंग समरी जितनी ही छोटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैराफ्रेजिंग पैराग्राफ की जो ओरिजिनल लेंथ है उससे भी आगे चली जाए, या फिर पैराग्राफ जितनी ही लंबी हो. पैराफ्रेजिंग ऑल्सो हैज़ टू बी शॉर्ट. अगेन जो प्रिंसिपल समरी के लिए अप्लाई करते हैं, वही प्रिंसिपल पैराफ्रेजिंग के लिए भी अप्लाई करते हैं, कि जो फालतू के वर्ड्स हैं उनको ना इंक्लूड करें, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इडियम्स हैं, उनको ना इंक्लूड करें. जैसे अगर कोई फ्रेज है या फिर कोई आपको लगता है कि जहाँ पे 4 शब्द यूज़ हुए हैं उनको 2 शब्दों में लिखा जा सकता है, तो उसको 2 शब्दों में ही लिखें. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे फॉर इंस्टेंस आपने अगर हिंदी गाने सुने हो तो हीरोइन की तारीफ में बड़े लंबे चौड़े तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, लाइक बड़े लंबे गाने बनते हैं. what if you have to make a summary of it, or what if you have to paraphrase it. तो अगर कोई बहुत लंबा चौड़ा ऑर्नामेंटल किसी ने कुछ ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा है, दैट the person looks great and has a very pretty skin, also has an amazing nature, and is also very kind, right? तो उसने 2-3 sentences में लिखा. What you can do is, the person is beautiful, kind and good looking, या beautiful and kind, उसको एक सेंटेंस में आप आधे सेंटेंस में लिख सकते हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग एट, कि जो ऑर्नामेंटल लैंग्वेज है उसको ना यूज़ करें, बहुत कम शब्द यूज़ करें. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इन बोथ समरी एंड पैराफ्रेजिंग. Again, you have a few examples. I'll share these notes with you. You have a few examples here and you can look at them for your practice. We still have time.
एनी डाउट्स सो फार? किसी को कोई डाउट्स है तो पूछें प्लीज. समरी और पैराफ्रेजिंग में किसी को कोई भी डाउट्स है तो पूछें, एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अच्छा, स्टूडेंट्स समरी और पैराफ्रेजिंग के क्वेश्चंस के बारे में पूछ रहे हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो होगा ये कि वो आपको एक पैसेज दे देंगे, ठीक है. ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको वो कोई स्पीच दे. जैसे आई डोंट रिमेम्बर इन विच ईयर, बट मार्टिन लूथर किंग की जो स्पीच है आई हैव अ ड्रीम, एक बार वो आई थी, राइट. हो सकता है कि वो कोई फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा हुआ आपको पैराग्राफ दे दे. फर्स्ट पर्सन नैरेटिव क्या होता है? फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है आई डिड दिस, आई वेंट हियर, आई डिड दैट. आई जिसमें आई होता है दैट इज फर्स्ट पर्सन नैरेटिव. तो ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको एक को पैराग्राफ दे देंगे, या तो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में या तो फर्स्ट पर्सन में स्पीच दे देंगे. उसको बोलेंगे कि ये आपका पैराग्राफ है. पैराग्राफ होगा 1 पेज लंबा. इसकी आप समरी लिखिए और इसको आप पैराफ्रेज कीजिए, ठीक है. दीज विल बी सेपरेट क्वेश्चन. समरी भी 10 मार्क्स की आती है, पैराफ्रेज भी 10 मार्क्स का आता है. तो आपको जो मैंने पॉइंट्स अभी एक्सप्लेन किए वो ध्यान में रख के समरी लिखनी है, राइट. दैट इज हाउ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम. I'll quickly explain paraphrasing one more time. So अगर कोई पैसेज है उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है, दैट इज पैराफ्रेजिंग, राइट. जैसे फॉर इंस्टेंस what example should I give you? You can do this activity for fun at home. You can listen to any of the speeches by politicians or anybody, and you can try writing it in your own words and see क्या डिफरेंस आता है ओरिजिनल स्पीच में और पैराफ्रेजिंग में. सो बेसिकली जब आप किसी के कहे हुए शब्दों को अपने शब्दों में रीराइट करते हैं, दैट इज पैराफ्रेजिंग. और कोई डाउट हो तो पूछें. All right. I don't see any more doubts. So let us move on to the next topic. Right. So the next topic is conversation and dialogue. Now, conversation and dialogue is a very, very, very important topic from the point of view of exam. Summary तो आएगा ही ज़रूर, मतलब वो पक्का है 10 मार्क्स का आएगा. Conversation and dialogue ही 110% आएगा, and it is very easy. See, I am telling you guys that ये जो writing वाले questions है ना, समरी के, कॉन्वर्सेशन के, डायलॉग के, पब्लिक स्पीच के, ये बहुत स्कोरिंग हैं, ये ज़रूर आएंगे. और लाइक आप बहुत ईजीली इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. यू कैन ईजिली, मतलब 50 to 60 मार्क्स के तो ये आते ही हैं, तो आधा पेपर तो इन्हीं से आएगा, राइट. So let us look at conversation and dialogue कि ये एग्जाम में कैसे आएगा, and how can we effectively write a good conversation and a good dialogue. I am focusing more on teaching this from an examination point of view, these topics, because they are actually important for the exam. And apart from that,
जहाँ तक हम प्रैक्टिकल पर्पसेस की बात करें, so you know like once you know how to, if you can write a good conversation for the exam, you can write a good conversation anyway, right? It does involve some knowledge of writing skills and speaking skills. तो कॉन्वर्सेशन या डायलॉग का क्या मतलब होता है? कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत। डायलॉग को अगर आप उसकी संधि विच्छेद करें तो डाया मीन्स टू, राइट, लॉग मीन्स टॉक। तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं उसको हम डायलॉग बोलते हैं, राइट। सो वाई इज कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग यूज? कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग क्यों इम्पोर्टेंट होता है? इट्स अ मीडियम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों के बारे में जानने के लिए, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। ट्रस्ट बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जो भी एक्टिविटी है, आप बिना बातचीत के कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। बिना बात किए आप डाउट नहीं पूछ सकते हैं, बिना बात किए आई कैन नॉट टीच। सो टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज, कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग, बातचीत इज इम्पॉर्टेंट। देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस। एक तो होता है आपका इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल, राइट। नाउ इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में क्या कौन से कॉन्वर्सेशंस आते हैं? अगर आप अपने पड़ोसी से बात कर रहे हैं या अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, हाय हेलो वाले कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, हालचाल पूछने वाले कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं तो आप कैसे बात करते हैं कि हाय हाउ आर यू, क्या चल रहा है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई, घर पे सब कैसे हैं, तुम थोड़े परेशान से लग रहे हो, क्या बात है, अच्छा तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या हो गया, यू नो। सो ये जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं दीज आर इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस। दूसरे होते हैं आपके फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस। फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस आर यूजुअली जैसे आपकी मीटिंग होती है उसमें फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होंगे। अगर कोई सेल्समैन किसी कस्टमर से बात कर रहा है तो वो फॉर्मल होंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होंगे, राइट। जैसे फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव टू schedule a meeting with somebody, I would say something like, good morning sir, can I speak to you for 5 minutes? And the person would be like, yeah you can. So you will give your introduction, or you will say that, sir I wanted to talk to you about a meeting that I want to schedule with you. The meeting is regarding this. Can we have a meeting at 10 a.m. tomorrow please? And then the person would say no I'm not free, and then you would say okay may I ask when are you free? So उसमें जो टोन है, उसमें जो कंटेंट है वो बहुत अलग होता है, राइट। सो formal conversations are very different. Now what we are going to do is we are going to look at the rough format or the rough structure of formal and informal conversations, some tips to write good conversations so that you can write well in the exam. जैसे आप इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन लिखेंगे तो ग्रीट ज़रूर करें। हाय हेलो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। वन मोर टिप टू राइट अ गुड कॉन्वर्सेशन इज कि नाम ज़रूर रखें। जैसे अगर क्वेश्चन में नाम नहीं भी दिए हुए हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन आता है कि यू आर मीटिंग योर फ्रेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट अ कॉन्वर्सेशन। या फिर क्वेश्चन आता है कि जैसे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं और किसी पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड हो गई है, तो वहाँ पे जाके गांव वालों से बात करें कि लैंडस्लाइड से उनका क्या क्या नुकसान हुआ। या फिर किसी गांव में जाएं और उनसे पूछें कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, या गांव में एजुकेशन कैसा है, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें डायलॉग होगा, इसमें कॉन्वर्सेशन होगा। तो अच्छा कॉन्वर्सेशन के लिए क्या टिप्स हैं? अच्छा कॉन्वर्सेशन लिखने के लिए हाय हेलो ज़रूर करें, नाम ज़रूर रखें। अगर नाम नहीं भी दिए हैं तो 3-4 कैरेक्टर्स खुद इन्वेंट करें, अपने कैरेक्टर्स खुद बनाएं। थोड़े इनोवेटिव नाम रखें, ऐसे रामू, कालू, शालू, लीना, शीना को अवॉइड करें। लाइक गिव सम क्लासी नेम्स। छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखें और मीनिंगफुल सेंटेंसेस लिखें। मतलब जैसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, वो हाय हेलो पे ही अटके रह जाते हैं, उनके कॉन्वर्सेशन बहुत ब्लैंड होते हैं। जैसे अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर ये क्वेश्चन आता है कि आप रिपोर्टर हैं और
या लेट्स से ये क्वेश्चन आता है कि आप अपने घर से बाहर रहते हैं, घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, आपकी मॉम का कॉल आता है और आप अपनी मॉम से बात कर रहे हैं, तो वो बातचीत लिखें, राइट? तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड लाइक कि खाना खा लिया और तुम्हारी पढ़ाई हो गई, यू नो। These are also very important conversations, of course, but you can add more content, right? You can add more content like कि अच्छा आप अपनी दवाइयाँ टाइम पे ले रहे हो क्या, आज हमारी क्लास में ये पढ़ाया, या फिर do you need money, are you keeping track of your accounts? So you know, like, you can add a variety to your conversation. That is what makes a good conversation. अगर आप सिर्फ hello hi करेंगे, WhatsApp करेंगे, तो that's not really a conversation. That's a very limited conversation, right? So these are some tips to write a good informal conversation. If you have to write a good formal conversation, ये ध्यान रखें कि आपकी जो टोन है conversation की, that should be polite. Greetings formal होनी चाहिए. Questions थोड़े ज़्यादा होने चाहिए. May I please ask you a question? May I please do this? May I take some time from you? What kind of shirts do you wear? You know, questions and politeness are very important for formal conversations. तो डायलॉग और कॉन्वर्सेशन में कुछ फ़र्क नहीं होता, दोनों सेम ही चीज़ है। फर्क बस इतना है, कॉन्वर्सेशन मल्टीपल लोगों के बीच में हो सकता है, डायलॉग यूजली 2 लोगों के बीच में होते हैं। तो डायलॉग एंड कॉन्वर्सेशन आर सेम थिंग। अबाउट द लेंथ, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट द लेंथ। 1 पेज से छोटा तो नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, और 2 पेजेस से ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि आप 5-6 पेजेस का कॉन्वर्सेशन लिख रहे हैं, because it will waste your time and exam में time कम होता है. But you know, like, make sure that you write quality. What happens is कि जब सारे स्टूडेंट्स एक ही कॉन्वर्सेशन लिखते हैं, वही सवाल, वही बोरिंग हेलो हाय लिखते हैं, तो it gets very repetitive to read. It gets, you know, like, just try to ask meaningful questions, try to add meaningful responses, right? That is something that you should keep in mind while writing your conversations and dialogues. If you have to talk about the speaking aspect of of being a good conversationalist, कि आप लोगों से, see, I'll tell you something. So या सो द थिंग इज दैट एग्जाम्स अपनी जगह हैं और एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना अपनी जगह है, बट देन यू नो, दीज सॉफ्ट स्किल्स ऑफ knowing how to speak, knowing how to talk to people, knowing how to really have great conversations, knowing how to ask the right questions at the right time, knowing how to sound interested, knowing how to make people feel important, knowing how to make people feel understood, knowing how to make people feel that you are a good listener. These are very, very, very important soft skills to lead a good life. There are so many people who are very awkward in conversations, who do not know how to talk well to people, and they suffer a lot, both in personal life and in professional life. How and why? Let's say आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, राइट, एंड यू आर वेरी awkward when you talk to people. You're going to fumble, you're going to be nervous, you're not going to have faith in your own abilities to communicate. आप कुछ और बोलेंगे, इंटरव्यू कुछ और समझेगा. You are probably not going to get selected and you are not going to land up the job that you want. That is how you can suffer. Uh, when you are traveling, when you are meeting new people, when you are meeting strangers, when you are going to public events, when you are networking,
Networking is a very very important part of life. You should know how to make friends. If you don't know how, like, if you don't know how to talk, you are going to have a hard time networking with people, right? लोगों के पास आजकल बहुत कम टाइम होता है. लोग चाहते हैं कि आप जो बात बोलें वो पते की बात बोलें कम टाइम, right? Nobody is going to wait for you to be able to explain yourself in, a lot of things. You have to explain yourself. You have to put whatever you are trying to put in less words in a short amount of time. That is why it's very important to be a good conversationalist. It's not something that's only for the motivational speakers or the celebrities. It's not something that's only for very rich people. It's for everybody to lead really good quality lives uh, on a daily basis. If you know how to have great conversations, your quality of life is going to be really good, right? Um, Now, what are the qualities? See, there are many qualities of a good speaker. There are many ways to be a good conversationist. It's in Communication is a science in itself, just like chemistry, physics, biology are sciences in themselves. वैसे communication is like a whole science in itself. बहुत brief में थोड़ा सा touch करते हैं कि क्या क्या अच्छे tips होते हैं एक अच्छे conversationist बनने के लिए. So first of all, if you want to talk well, you have to listen well. You have to be a good listener. Why is that important? Because अगर आप सुनेंगे नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि अगला सवाल क्या पूछना है, कि अगला टॉपिक क्या उठाना है और कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाना है, राइट? When it comes to speaking, हमें अक्सर बोला जाता है थिंक बिफोर यू स्पीक. तो जो भी मन में आए वो ना बोलें, रादर अपने स्टेटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस को इवेलुएट करें, राइट? और उसको एक अप्रोप्रिएट तरीके से बोलें. दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. Of course, you have to be interested to have a good conversation. You have to be clear in your expression. You have to be polite. You have to be positive. Nobody likes talking to people who are negative all the time, like all the time, who can only talk about negative things. So being positive is important. Being flexible is also very important, because see, people are different. People come from different geographical, psychological, physiological, economic, political, socio economic backgrounds, right? अगर आप, if you're rich, you might say that money is not important. But if someone is poor and has suffered because of a lack of money, they might say that money is important. So you have to be able to understand the other person's side of the story. कि वो जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है. And you have to be flexible. You cannot always say that what I'm saying is always right. Right? So flexibility is very important. Empathy and kindness are very important. The use of proper body movements is very important if you want to, make an impact. These are the very basic, like very very basic points when it comes to having good conversations. There are so many more which make communication a very interesting science. All right. So we have covered the very very important topic today related to the writing and the speaking part of the syllabus, conversation and dialogue, summary and paraphrasing, and what else did we cover? Public speaking, right? किसी को कोई डाउट है सो फार तो पूछे. तो अभी तक जो भी पढ़ा है आज हमने, कोई भी डाउट है तो पूछे प्लीज. यू हैव like 5 minutes to ask your doubts. About the marking scheme,
नॉट श्योर। यूजुअली राइटिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 10 मार्क्स के आते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट वर्ड लिमिट नहीं है फॉर स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग अबाउट वर्ड लिमिट। कोई हार्ड एंड फास्ट वर्ड लिमिट किसी भी चीज़ की नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा अगर आप इतने वर्ड से ज़्यादा लिखेंगे। इट्स नॉट लाइक स्कूल। कोई और डाउट्स हो तो पूछिए प्लीज। Someone is asking monologue and conversation same है ना? नहीं, मोनोलॉग एंड कॉन्वर्सेशन सेम नहीं है। मोनोलॉग एक टाइप का कॉन्वर्सेशन है। मोनोलॉग का मतलब हुआ कोई एक इंसान एक ऑडियंस के सामने बात कर रहा है, लेकिन उसमें वो खुद ही बोल रहा है, कोई दूसरा इंसान पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, राइट। कॉन्वर्सेशन में एक से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे इफ आई कीप स्पीकिंग फॉर द नेक्स्ट 5 minutes without allowing anybody else to speak, that's going to be a monologue. But if I'm interacting with you, if I'm asking you questions, you're giving me answers, that's a conversation. Monologue और conversation same नहीं है। So for people who are getting confused with monologue, soliloquy, dialogue and conversation, monologue and soliloquy में सिर्फ एक इंसान पार्टिसिपेट करता है जो बोल रहा होता है, दैट इज इट। कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग में बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अबाउट द मार्किंग स्कीम एज आई सेड, जैसे मैंने जो ये आज 3 यूनिट पढ़ाए हैं ना, तो सबसे पहले तो ऑप्शंस आते हैं क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं है कि वो आपको क्वेश्चन दे देंगे और आपको वही आंसर करना है। आपसे पूछेंगे आपको स्पीच लिखनी है कि आपको पैराफ्रेज करना है कि आपको समरी लिखनी है ना, तो ऑप्शंस आएंगे। और ये जो है समरी, पैराफ्रेजिंग, ये 10 to 15 मार्क्स का आता है, यूजुअली 10 मार्क्स का आता है। तो ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। अगेन मोनोलॉग और डायलॉग सी, उसको लिटरली समझो। मोनोलॉग में मोनो का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है। डायलॉग में होता है डाई का क्या मतलब होता है? डाई का मतलब होता है टू। तो मोनोलॉग का क्या मतलब है? मोनोलॉग का मतलब हुआ जब एक इंसान बोलता है। डायलॉग का मतलब हुआ जब 2 लोग बोलते हैं, 2 लोग आपस में बात करते हैं, राइट। Politicians giving speech is a monologue. No, because जब politicians speech देते हैं तो audience, मतलब politicians giving speech is an example of public speech. बिकॉज उसमें जनता भी तो इंटरेक्ट करती है। मतलब मोदी जी बोलते हैं जय श्री राम, तो बाकी सभी तो नारे लगाते हैं जय श्री राम। तो इट्स नॉट अ मोनोलॉग, इट्स अ पब्लिक स्पीच। मोनोलॉग में ऑडियंस का कोई इंटरेक्शन नहीं, मोनोलॉग में किसी दूसरे इंसान का कोई इंटरेक्शन नहीं। जब आपकी मम्मी आपको लेक्चर देती हैं और आप मुंह बंद करके सुनते हैं, दैट इज अ मोनोलॉग।
yes, डायलॉग में यूजुअली इट्स टू पीपल। सी, होने को तो कितने भी लोग हो सकते हैं, बट यूजुअली इन अ कन्वेंशनल सेंस, मतलब डायलॉग जो शब्द है उसका मीनिंग ये है दो लोगों के बीच में बातचीत, और कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। Someone has asked a very interesting question: is talking to God a monologue? That depends what your beliefs about God are. But yeah, mostly it's a monologue. Yes. Any example of monologue? अच्छा, आप ना अपने सिलेबस में, सिंस यू आर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आप अपने सिलेबस में रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम्स पढ़ेंगे। वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो उनकी पोएम्स में क्या होता है कि एक ही इंसान बोलता है, दैट्स अ मोनोलॉग। हमने जो चैप्टर किया था मोनोलॉग और सोलिलिटी वाला, उसमें रोमियो एंड जूलियट जो प्ले है शेक्सपियर का, उसमें एक स्पीच थी रोमियो की। अ, वो एक मोनोलॉग है उसमें, मतलब क्या पता नहीं, जूलियट जूलियट की स्पीच थी। उसमें ऐसा होता है कि रोमियो रोमियो बालकनी के नीचे खड़ा होता है, जूलियट बालकनी में होती हैं, और वो रोमियो को कुछ बोल रही होती है और रोमियो सिर्फ सुन रहा होता है, जूलियट बोल रही होती है। तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ मोनोलॉग। यू नो लाइक, जितना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं सोलिलिटी और मोनोलॉग में, उतनी कंफ्यूज होने की बात है नहीं। आई एक्सप्लेन सॉलिडिटी अगेन। तो बेसिकली सॉलिडिटी में कोई प्रेजेंस नहीं होता, सॉलिडिटी में कोई एक इंसान प्रेजेंट नहीं होता जिससे आप बात कर रहे होते हैं, आप खुद ही से बात कर रहे होते हैं। मोनोलॉग में कोई एक प्रेजेंट होता है लेकिन वो चुप होता है। सी, आई विल गिव यू अनदर वेरी सिंपल एग्जांपल। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर एसओएल वाले अनाउंस कर देते हैं कि 2 दिन में आपका एग्जाम है, ठीक है, तो आप जो अपना सर पकड़ के टेंशन में अपने कमरे में चक्कर लगाएंगे कि यार कल एग्जाम है, मैं अब क्या करूँ, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, मेरे पास तो नोट्स भी नहीं है, मैंने तो लेक्चर्स भी मिस कर दिए थे बीच में, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, गॉड प्लीज़ पोस्टपोन हो जाए डेट, कुछ हो जाए, हाउ कैन वी डू दिस। तो this sort of conversation is a is a solidity, ठीक है। You're talking to yourself, there's nobody in your room, you are not addressing anybody, you're not talking to anybody, right? You're talking to yourself, you are tensed, you're talking to yourself, you are talking to yourself so that you can relieve your tension, that's a solidity. अगर आपका एग्जाम हो गया 2 दिन में और आपके बहुत घटिया नंबर है, तो जो मम्मी पापा आपको सुनाएंगे और आप जो मुंह बंद करके सुनेंगे कि बेटा और लगो फ़ोन पे, आधे दिन फ़ोन पे लगे रहो, हमने तो बोला था पढ़ लो लेकिन तुमने तो पढ़ा नहीं, अब देखो क्या कितने घटिया मार्क्स आए, राइट? और आप कुछ बोल नहीं पाएंगे बिकॉज आपने पढ़ा नहीं। सो दैट इज गोइंग टू बी a monologue. You are going to be there, you are going to be listening, there's going to be a listener, but you are not going to speak, there's only going to be one speaker and one silent listener. So that's a monologue. Okay. You have one last minute to ask questions. उसके बाद फिर we'll end the class. कोई डाउट हो तो पूछिए। Alright, I don't see any more doubts. So we are going to close today's class. I hope that you had a good day. I hope that you understood everything that is for today. Tomorrow we are going to cover more topics related to reading and writing. Right? We are going to cover letter and we are going to cover reading comprehension. They are also very, very important topics from the point of view of exam. Alright everybody.
Have a good day. Bye bye. Very good morning.